observations. It was equal to 100 मैडम. अब यहाँ पे है ना मैडम, हम लोग फाइंड करते हैं बड़ा करेक्शन फैक्टर. क्या फाइंड करते हैं? करेक्शन फैक्टर. करेक्शन फैक्टर जो है ना मैडम, but it is a ratio of the error to the number of observations. तो ये आंसर बेटा मुझे मिल गया 0.1. ये आंसर बेटा मुझे मिल गया 0.1 बेटा. ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, मुझे फटाफट करेक्ट मीन भी मिल जाएगा. जो करेक्ट मीन होगा ना बेटा, करेक्ट मीन it will be equal to, ये देख, wrong mean minus correction factor. Answer for that it will be 39.90. फिर एक बार बेटा सब में चेक कर ले. करेक्ट मीन अपने को भी बेटा 39.90 ही मिला था. है ना? बोल, आंसर बोलेगा तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा. Correct standard deviation will be equal to wrong standard deviation minus the correction factor. चेक कर, करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बेटा 5 तो नहीं था कहीं? कहीं अपना आंसर बेटा 5 तो नहीं था? Oh my God, जोयू, जोयू दिख रहा है? जोयू, केवो आयो आंसर फटाफट. और ये देखने के बाद बेटा मुझे मनी मन कोसने का नहीं है. साले ने अपने को खाली पीली इतना पहले लेंदी मेथड कराया, बाद में हम लोग को ये शॉर्टकट दिखाया. यस यस अभियो, मनी मन कोसने का नहीं मुझे बेटा. ये शॉर्टकट मेथड है बेटा, शॉर्टकट. एंड शॉर्टकट मेथड बेटा, इट हैज द लिमिटेशंस. ये हम लोग बड़ा हर टाइम यूज नहीं कर सकते. ये मेथड बड़ा सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब एरर जो है ना बड़ा, एरर
it becomes the multiple of the number of observations. देख लिया होगा यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा रहा हूँ। ये मेथड कब यूज करना है, ये मेथड बड़ा कब यूज करना है तुम लोग को, जब एरर जो है बड़ा एरर if it becomes बड़ा the multiple of the number of observation, तो ये मेथड काम करेगा, नहीं तो ये मेथड काम नहीं करेगा। समझा बेटा सब लोग को। ये मेथड अगर मैं फर्स्ट तुम लोग को दिखा देता है बेटा, तो तुम लोग अपना ओरिजिनल मेथड जो है वो तुम लोग कभी नहीं देखते बेटा, कभी तुम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए पहले मैंने तुम लोग को बड़ा ओरिजिनल मेथड बताया और उसके बाद बेटा ये शॉर्टकट सिखाया तुम लोग को। चलो बेटा नेक्स्ट, बेटा कॉपी कर लो और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो कहीं पे लिख लो बेटा सब। चलो नेक्स्ट, बेटा सम नंबर 20 मार्क करो, इंपॉर्टेंट, पास एग्जाम में बड़ा पूछा गया समय और उसमें बड़ा करेक्शन था। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ax प्लस ax plus b upon c, where a, b and c, they are the arbitrary constants. The value of c is not equal to 0. Standard deviation of x is sigma, and we want to find the standard deviation of ax plus b upon c. Anyone can guess ये सम किसके ऊपर बड़ा बेस्ड है? It can be used only when error is the multiple of the number of observation. Error is the multiple of observation. Savio. Yes, Parth. The sum is based upon a linear equation. That is a linear relation. चलो तो यहाँ पे बड़ा something is missing. Something is missing, but in that. For some number, when d, but a y wala term is missing. Why? You can make a note of that. Let y is equal to
let y is equal to ax plus b upon c. Let y is equal to ax plus b upon c. But everyone knows that this given relation, it is not exactly in the standard form. Not exactly in the standard form. Standard form means it is not in the form of y is equal to a plus bx. अब नहीं है तो क्या करें? लाना तो पड़ेगा मैडम. So y will become equal to ax upon c plus b upon c, which is a, which is in the form of a, which is in the form of y is equal to a plus bx. तो तुम लोग ऊपर वाले टर्म्स को खाली रीअरेंज करके मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a by c. Modulus of b is equal to a. It will be the modulus of a by c. Standard deviation of x is sigma. Target is to find standard deviation of y. Standard deviation of y will be equal to modulus of b into the standard deviation of x. वैल्यूज तो है ना बेटा तुम लोग के पास. फिर एक आंसर आ गया बेटा.
that is equal to modulus of A by C into sigma. But we know that when we write any value inside the modulus, the answer is पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर चेक करके मुझे बताओ विच ऑप्शन इज द आंसर। चलो बच्चा लोग फटाफट बताओ विच ऑप्शन इज आंसर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अरे बोलो क्यों डर रहे तुम? ट्राई करो। मॉडुलस ऑफ A by C विल बी मॉडुलस ऑफ A by C। चेक करो ऐसा आंसर लिखा है तुम लोग ने मैडम? अच्छा ऑप्शंस भी प्रिंट नहीं हुए है ना? सॉरी मैडम, ऑप्शन प्रिंट नहीं हुए। अगर किसी ने ये आंसर बड़ा ऐसा लिखा है, ये आंसर बड़ा ये फॉर्म में अगर किसी ने लिखा है बड़ा ये, तो बड़ा इट इज 100% रॉन्ग। मैंने हमेशा ये सीखा है बड़ा कि मॉडुलस ऑफ एनी नंबर द आंसर इज बड़ा पॉजिटिव। यहाँ पे ए बी सी बड़ा ये सब कांस्टेंट है बड़ा, कांस्टेंट। मॉडुलस ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बड़ा इट रिमेन्स वन और द सेम, वो बिल्कुल कभी चेंज नहीं होता है मैडम। तो जिसने भी बड़ा ये आगे सॉल्व किया है दैट इज रॉन्ग। दिस इज ओनली द फाइनल आंसर। दिस इज ओनली द फाइनल आंसर। ये देख
आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा तुमको। And here बेटा we complete with the chapter बेटा measures of central tendency and measures of dispersion बेटा। चलो take out the assignment sums। तो आगे बेटा assignment sums में चलो आगे सब लोग बेटा assignment sums में चलो बेटा calculate the quartile deviation बेटा for the following data। first number quartile deviation बेटा फर्स्ट सम का तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। How will find the quartile deviation? चलो फॉर्मूला बताओ बेटा फटाफट। Quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 upon 2 days of the week. It will be considered as X. Number of units sold, it will be considered to be as F. So by considering ungroup data with frequency, first you will find the value of Q1 with the help of the position locator. Then you will find the value of the Q3 again by using the position locator. Substitute the value and get the final answer. So sum number 2, find the standard deviation. So find the standard deviation. Given data is an example of ungrouped data with frequency. By using the simplified form, standard deviation, sigma is equal to the whole root of summation of the fx square whole upon capital N minus x bar the whole square
बट ये फॉर्मूला अपने डायरेक्ट यूज कर पाएगा? डायरेक्ट नहीं, पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा बड़ा. फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर एक्स, सेकेंड कॉलम फॉर एफ, थर्ड कॉलम फॉर एफ एक्स. मीन का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा मैडम. कॉलम नंबर 4 it will be for x square. Column number 5 it will be for fx square. तो बता टोटल किसका किसका करेगा? टोटल will be required for f, fx, fx square. चल वेरी गुड सभी हो. चल एडिशनल सम्स फटाफट आंसर बोल, फटाफट एकदम. एमसीक्यू से बड़ा ये तो सब. Which one of the given measures of dispersion is considered as best? चार ऑप्शन है बड़ा तुम लोग के पास. याद रखना कोई लाइफलाइन नहीं है तुम्हारे पास. Very good. Savio is given the correct answer, madam. Option A. Question number 2 देख madam. For comparison of two different series, the best measure of dispersion is. Very good. क्या बात है? It is coefficient of variation. Next, the correct relation between variance and standard deviation of a variable x is. जिसने बड़ा ऑप्शन सी बोला है वो रॉन्ग है मैडम. Standard deviation is the root of variance. Standard deviation, but it is the root of variance. So what is square root of variance can also be written as raised to 1 by 2. Option B is the correct answer. चलो बड़ा नॉन में स्टूडेंट क्रिश धवल भावना लोग बड़ा आंसर क्यों नहीं दे रहे सब? एड्रियन, mean deviation is minimum when it is taken from. ये तो बड़ा जिस किसी भले इंसान ने तुम लोग को बड़ा सिखाया है. चल नेक्स्ट. Right, it is median, madam. The average of the sum of the squares of the deviation about the mean is called as average of. Correct. Summation of x minus x bar the whole square upon n. What you will call this as, madam? Correct. Utkarsha, very good, madam. Rishabh, it is called to be as variance. Option E is answer.
बेटा क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू वेरी गुड, इट इज अ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। पढ़ाने के टाइम सिखाया था बेटा मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ो, which measures of dispersion can be calculated in case of open and class intervals? Very good अभी, ऑप्शन सी इज आंसर। और चलो बेटा ये टॉपिक समझा सब लोग को? एकदम इजी था बेटा, एकदम परफेक्ट। अच्छा तुम लोग का बड़ा स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन रिग्रेशन खत्म हो गया ना? कोरिलेशन रिग्रेशन ऊपर सबने पढ़ा दिया ना, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिप्लाई करो बेटा फटाफट। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और डिसा सर ने तुम लोग को बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो टॉपिक बड़ा सब लोग रिवाइज करना, ठीक है? रिवाइज करके रखना, उसकी जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे। कल से स्टार्ट होगा बेटा, कल से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी। चलो बेटा बाय ऑल ऑफ यू।